So in last class, we have studied the basic only. Okay, so this class we are going to study what is the balance diet and everything. So just starting before that, last time I told you okay, what does the body need and why we need the food, importance of food in general. Okay, so before going into the depth of this, I need to ask you, do you have any idea related to, um, why we need, having a proper diet and what is the difference between your this food, nutrition, and nutrients? Do you have any idea related to that? No, ma'am. Ma'am, as per my knowledge, nutrition is basically the process of consuming the nutrients, and nutrients are all Mhm. the chemicals that support the development and maintenance of our body or any living organism. Okay, okay, it's good, it's good. But before just moving into this depth of the whole process, why we are doing this and what is the importance of having a balanced diet, I just told in last class what is the basic general thing which we need. Basically, food is anything. If I talk, there is a little bit difference in all of the three things. If I talk about food, food is anything. It may be any solid material, it may be any liquid material to fill our stomach, I can say, in general, like we feel hungry. It's an emotional process ki we feel hungry. It's an emotion. So what we need to do to subside that hunger, what we take certain amount of solid, we take certain amount of liquid, or as per our mood requirements, okay, or as per our body requirements, okay. But it's not every time we are taking whatever is requirement for the growth and development of our body, okay. We are not if I talk about food in general, it is not always say कि is always contain a appropriate amount of nutritional demand, जो कि आपका dietary allowance, आपका जो ये होता है आपका routine free dietary allowance जो body का requirement होता है उसके हिसाब से, तो when we are taking that food into the balanced quantity, the quantity which is required for the growth and development as per age, as per circumstances, as per different criteria, whatever the amount of food we are taking into that particular, for example, एक चाइल्ड की बात करूँ, इफ आई टॉक अबाउट अ लिटिल बिट अबाउट अ चाइल्ड, चाइल्ड का डेफिनेटली 5 से 10 साल के बीच के चाइल्ड का बॉडी डिमांड डिफरेंट होगा, 10 से 15 साल के बच्चे का डिमांड डिफरेंट होगा, बट 1 से 2 साल या न्यूली बॉर्न बेबी का डिमांड डिफरेंट होता है। तो एज पर द एज जो भी बॉडी का रिक्वायरमेंट होता है, उसको जब हम अप्रोप्रिएट अमाउंट में लेते हैं, उसी को हम बैलेंस डाइट कहते हैं, ओके। सो एन अनबैलेंस डाइट कैन लीड टू डिफरेंट कंडीशन, डिजीज कंडीशन, जो कि हम हर चीज को बॉडी का जो रिक्वायरमेंट है, अगर हम उसको उतना अप्रोप्रिएट अमाउंट में एवरी डे वी विल सप्लाई, what happens, we will not suffer from any kind of disease condition. If we take over or less, that will cause a disease condition. So uh, if I talk about, so that's why we need the balanced diet. Okay. So an unbalanced diet definitely can lead a disease condition. Okay. So what is the food? Now I have explained you, you can understand. Now I'm going to explain what is your nutrition. Okay. So nutrition in general, if I talk about, okay, as you told, it is a science where the food and nutrients and other substances that is present into your body contains several actions जो आपका digestion process में start होता है, release of different kind of enzymes, उनका catabolism, anabolism, and फिर वो कैसे body में absorb होते हैं, that is whole process will be considered under your nutrition. On nutrients is that whatever the supplies that food will give to the body will be your nutrients. It may be carbohydrate, protein, fat, vitamins, and minerals. Clear? Yes, ma'am. So now coming to balanced diet. Okay. So balanced diet is one of the which includes varieties of food, maybe adequate amounts, maybe a correct proportion, I can say, or maybe the daily requirements. Like I told you, कि different age group का body का requirement different होगा. Like if I talk about like in general, like आपका normal working, and if you are working for some extra hours, or you are working like you want to reduce your weight or you want to gain some weight, so different conditions में आपका requirement. If you are a diabetic, if you are
if someone is suffering from any specific particular disease condition, or they are having, तो उस कंडीशन में, पर्टिकुलर डिजीज कंडीशन में आपका डाइट जो है वो वैरी करता है, वो चेंज हो जाता है. ओके, सो अप्रोप्रिएट क्वांटिटी में लेना, अप्रोप्रिएट प्रोपोर्शन में लेना, as per the content, your daily routine requirement of all these nutrients is considered as your balanced diet. Okay, so how we are going to decide कि what is the safety margin and for what many times? So there is, you can go and check. There is, RDA requirements for all nutrition depending upon the body, uh, age, I can say, or wait a minute, I'll share. You can see, screen is visible. Yes, ma'am. It's visible. Okay, so you can see how, the depending upon what kind of lifestyle you are, living in day-to-day life, and what is the calories requirement of calories range as per the different age group. They have mentioned over here. So in same manner, sedentary means if you're not too much active, if you're not too much playing or doing just watching TV or doing all those indoor or on bed or in room activities, in that scenario we called it as sedentary lifestyle. Okay, if you're too much active, involved into different type of physical activities, doing different types of sports, so in that scenario your definitely your calories requirement will be little bit increased. Okay, so depending upon the different scenarios and different age groups, we have, prescribed as per the your RDA requirement. We have, given the different charts, depending upon the height, body weight, and everything. Okay, so that is considered as, and what is the dietary allowance or requirements plus margin safety we are checking. Okay, so balance diet will be recommend, what it will contain. It will contain your recommended dietary allowance is equals to requirement plus margins of safety. It doesn't mean कि requirement तो है पर हम over दे रहे. If we are, initially started giving anything too much excess, what happens? Body will not able to directly consume. We have seen certain times it will cause certain kind of other, indigestion or some other minor disease condition. So safety margin, providing that dietary requirement is necessary along with safety margins. Okay. So balanced diet is equals to recommended dietary allowance is equals to requirement plus your margins of safety. This is general formula which we are going to follow in our day-to-day life. Okay, so balanced diet, what all following aspects we need to keep into mind? So that will be includes a variety of food items. Okay, if I'm giving you daily, if I talk about as balanced diet, but in iron I'm daily giving you a beetroot. What happens? Someday you will get frustrated. You don't like that taste anymore. Your body, say your taste buds, and you getting, this is the same boring food I'm getting every day. So it includes a variety. Your range should be definitely higher. Okay. Second thing meets the RDA, means your dietary your recommended dietary allowance should be nutrients should be met properly, whatever the requirement, including the correct proportion. If I'm giving the correct proportion, then I need to also monitor, I'm giving the iron, whether that iron is getting absorbed by body or not. If I feel, if I'm giving the calcium, whether that calcium is utilized by body or not. If required, I need to give additional D3 also. I ask the patient, if you're not taking any D3 weekly sachet, you can do one thing. You sit early morning when the sunrises happen, 15-20 minutes in sun, and in evening also you need to do that. So why I'm, doing all these changes, I'm so the maximum utilization of that particular substance will take place into the body. Okay, clear? So broadly, if I divide everything into the this pattern, so it will be into the macro and micronutrients. Okay, so macronutrients is which is broadly required by the body. Okay,
and micronutrients is which is in required by the body in a very small proportion. Like if I talk about macronutrients, so macronutrients will include your carbohydrate, your proteins, your fat, okay, including water, roughage, plus certain amount of vitamins. That is coming under your macronutrients. If I talk about micronutrients, micronutrients is basically includes your minerals, okay, and certain amount of vitamins, fat soluble vitamins, okay. So if I talk about micronutrients, so what is the micronutrients? Minerals includes your phosphorus, your calcium, your iron, your iodine, and fat soluble vitamins. So these will be considered under your micronutrients. Okay, clear? Yes, ma'am. So health is, if I talk about health, health is directly, you can see, is dependent upon your balance diet. Ki what kind of food you are taking, what is your serving, how many times you are serving. And if I'm giving the recommended diet as per your height, it should not increase the weight, it should not decrease it. If I'm seeing it is giving too much of weight, then I need to check. Okay, कि body weight for height is managing or not. That is your known as body mass index. You know, तो BMI जो हमारा बॉडी मास इंडेक्स होता है, we should keep a eye on that also if I'm giving the balanced diet to any particular person. Okay, so whenever we are recommending any balanced diet, it should keep into the mind कि आपका ऐसा ना हो कि too much overweight हो गया या too much underweight patient चला गया. Okay, next thing is कि lastly we need to check the preservation of good health, that patient should not suffer any kind of disease condition. For example, if I give too much of iron in a day to a patient, what happens? Usually, he or she will suffer from certain type of motions. You know कि a lot of आपका lose motion start हो जाता है, आपको कई बार frequent motions होने लगते हैं. तो that is again we can see कि एक आपका जो है multivitamin, same thing happens with antibiotics also कि आपका over antibiotic अगर आप डाइट में दे रहे हैं, too much of जिंजर और आप टर्मरिक ऐड करके पेशेंट की डाइट में दे देंगे, तो ही और सी विल सफर सर्टेन काइंड ऑफ सेम थिंग्स. ओके, कि ओवर of anything will cause a deterioration of health, I can say in general. Okay, so safety margin of any nutrition is very important. Okay, so, health and fitness is directly proportional to your diet. Okay, so it is all, if I can say, ki what kind of your health. In general, we say ki health is a state of emotional and psychological well-being, able to use his or her whatever the cognitive or emotional capabilities to particular functional society and how they are responding. So health is WHO if we can go and check into the definitions, the state of social, emotional and mental well-being. Okay, physical, mental well-being. तो आपको सारे फैक्टर्स चेक करने पड़ते हैं. तो डाइट इज नॉट ऑलवेज रिलेटेड टू योर only to physical health, I can say, but sometimes it is directly affecting your mental health also. I can say कि for example, अगर आपको किसी का मूड चेंज करना, he or she is in too much of anger, what we used to ask that person to drink certain amount of cold water. Definitely, you will see the change into the mood of that person. Drink certain amount of shake. It will with I can say caffeine. Definitely, it will change your mood. So that's why people are, when they are into too much of stress, they are having a craving for tea. Sometimes you can see, or coffee. You can see. Okay, and same thing happens if I provide you certain amount of sweets. So it will definitely alter your mood. Okay, so these are the different kind of dietary habits that is going to affect your mental health also. Okay, so you can see now how this balanced diet is going to affect not only the physical health, the meanwhile your emotional health also. Okay, so basically the different groups we have for the balanced diet planning, what we used to do is we divide different group wise planning. Okay, so one of the easiest and simplest way to provide the balanced diet is planning. Okay, so plan the balanced diet. How you are going to plan the balanced diet? Okay, so we divide into the groups. For example, कि breakfast में we can do कि breakfast में क्या देना है, lunch में क्या देना है, dinner में क्या देना है, and we need to check कि person का lifestyle कैसा है, कितना activity कर रहा है, कितना नहीं कर रहा है. On the basis of that, we divide. Okay,
same time we need to check कि what is the age group of the person. Okay, कि उसका body का growth development के हिसाब से कितना requirement है. और on the basis of that we divide the food into cereals, grains, and related products, then pulses and legumes, and milk and meat products, fruits and vegetables, fats and sugars. So we need to check whether the person is what category, what he likes, what she likes. On the basis of that we properly plan the diet of a patient. Okay, clear? So now we have divided all this balance group planning into if I talk about like the product wise, we divided into five groups basically. Food groups, if I talk about. So one is your cereals and grains products. Second is your pulses and legumes. Third is your milk and dairy products. Along with meat or chicken, whatever the person will take. Some will go for, not everyone is going for non-veg things. So certain will go for milk, cheese, curd, and everything. Okay. So next is fruits and vegetables. And vegetable plus greeny leaves, other vegetables like your greeny leaves. Other than that, we consider this carrot and all these things, drumstick, onion, cauliflower, will consider under other. Lastly, we have the category is your fats. Fats is also very important. Okay, if we are not taking the fat into the proper appropriate amount, what is the function of fat in general? If I talk, so it will provide your warmth, heat to the body. Second thing, it will provide lubrication to the different areas. Okay, so fat storage again cushion effect to the body also. So fat is also important for certain reasons into the human body. Okay, so it has again its own importance. Okay, so these are the basic food groups which we divide. Okay, now coming to this, you can see different age group and different I can say different groups wise how we divide this into different areas. Okay, so you can see like fruits. If I talk about 1 cup of fruit I'm taking, okay, so definitely it will get 1200 amount of calories of energy. Okay, 1.5 to 1400. So once we are increasing the quantity of fruits and what kind of fruit we are taking, definitely your nutritional needs for that particular na, including all these things you are taking 1 cup plus 1.5 cups of vegetable plus 4 ounce or equivalent of grains. You are taking same amount of meat you are taking, so you are getting 1200. Once you are increasing the grains, now you can see definitely in next group your calories increases. Okay, so you can see ki how the food, especially if I talk about the most important thing, the maximum calories we get from or energy we get from your carbohydrates. Once you increase one chapati, means definitely one chapati is somewhat adding near about your 110 to 150, I can say, calories. Okay, so breads definitely they are adding a lot of calories to your food. So depending upon that, we allow the patient, okay, or person. Okay, next thing is we go for servings like plate wise, or what in my plate I can take. But first we will discuss this your pyramid, food pyramid, then I'll come to your servings. Okay, wait a minute. Okay, so here is your food pyramid. Okay, so if I talk about food pyramids, basically you can see ki, at the base it is broader, and at the top we are going, the things will be getting decreased and decreased. Okay, so depending upon the need and what is the basic, body requirement, we designed this food guide pyramid. Okay, so food guide pyramid, as we can see, it is a basically graphical
representation of your daily food diet. What you should take and how much amount you should take. Okay, so bread, cereals, rice, and pasta. If I can say the group wise, so basically in this also we divided food into different, high glycemic index and low glycemic index carbohydrates we divide. Okay, and depending upon that we need to check what is the high glycemic index product and what is low glycemic index product. Second thing we check what is the requirement of the body, and next in carbohydrate also we check for gluten free and gluten containing products. Okay, so anyone is having any idea where we find gluten? Could you please repeat your question? Anyone is having any idea where we find gluten? Wheat, Okay, beet. Anything else? Very commonly being Indian we use that. ma'am, wheat, barley, carrot, Wheat bar. Okay, okay. So wheat is basically, yes, the flour, wheat flour we are using. I thought it's beet. So that's why I thought the beetroot is not containing that. Wheat is definitely containing that. Wheat is rich into the gluten. Okay, so gluten takes a lot of time to digest into the body. Okay, so gluten definitely the cereals. If I talk about a lot of is basically if I talk about it's a natural protein. Okay, but a lot of if I talk about like your wheat, drums, splits, hosan, all these things, barley, rye, oats, all these things will contain your this gluten. Okay, but what happens it will take normal again if you take rice it will digest into 6 to 8 hours or maximum 10 to 12 hours. But if I talk about gluten it will take longer time to digest like 12 hours or 16 or more. Okay, so definitely if I'm talking about carbohydrates it is the basic pyramid is requirement is more, and definitely whatever we eat like vegetable and everything. So we take this the carbohydrate because energy source. We are getting energy. So to work out everything into our day-to-day life, we need energy. So definitely the requirement of this carbohydrate is also high. Okay. But we need to check again into that we go for like if I'm overweight. So what I should go for? I should go for like pasta. Pasta is what? Low glycemic index. It will provide me the instant energy or energy to work. It will fill my stomach, but same time it will not providing me extra calories. Okay, so in this way we need to check. Okay, so other than this we can see the lower base we add energy giving. Second way we take in second range you can see the vegetable groups. It will be your fruit serving or vegetable serving. So if I talk about it will be divided into two parts. Half is containing your food serving, half is containing your vegetable serving. So total if I talk about vegetable we should go for 3 to 5 serving and fruits we go for 2 to 4 servings. Okay. Servings means we should not take anything in chunk or whole at a one time. We are going whatever the amount of carbohydrate, whatever the amount of fruits we need, we divide it into different servings. You divide it into different plates. Okay. Then next category, if I talk about, is your bodybuilding foods. Bodybuilding food. It will be like your protein. I can say like meat, pulse, your this pulses, milk, yogurt, and all non-vegetarian will be egg, dry beans, whatever will provide your Nutella and everything, soya, chickpea, everything will come under this. So we should take 2 to 3 servings. Okay. Next is your at the top, we should take into the very little amount. Very little means energy giving again food, but in very little amount, that will be your fats, oils, and sugars. Okay. So this is again a food pyramid. If I talk about food pyramid, it was published in Sweden. First time it was published in Sweden and in 1970. And after that, the United States Department of Agriculture introduced this food guide pyramid into the general plan of each day meal. Okay.
So that will be from there, promoting the health diet, balanced diet, and everything, nowadays. So this will be getting into, day to day working. Okay. And by following this guide, I say ki you are, so shorting your 60 to 70% of diet itself. Okay. So if someone is following this food guide, definitely if they are taking like into different servings and different quantities, definitely they are, 50 to 60% of your problems will be sorted out. Okay. Other than this, what is other important, choose, choosing the food I told you, ki like what is the right balance, food for right person. So I told you earlier, ki what kind of that physical activity, whether the person who kind of is above the age of two or below the age of two, what is your exact age, and depending upon what is your lifestyle, basically that is how much active you are. If you are definitely are working 2 hours 3 hours in a day, your protein requirement, your calories requirement will be more. But for example, if someone is living totally sedentary and hardly walks like uh 50 meters or 30 meters at a very slow speed, so definitely their requirement will be different. Okay. So on the basis of that, we divide these different bands of food and suggest the patient accordingly. Now coming to the think of proportion. Depending upon my body weight, depending upon my body size, what is the proportion? For example, if my weight is 80 kgs and my height is 5.5, definitely I'm overweight. In that scenario, what I need to do, I need to cut my fat, I need to cut my sugars, I need to cut my carbs. Okay. And I need to add more veggies, more fiber, okay, more roughage into my diet. Okay. So depending upon the body weight, we need to think for what kind of proportion we need to take. Okay. Take in moderations like mid set. We need to create, it's not a one day process, it's a habit we need to follow up. Okay. And moderate, we need to not over, not less. Like I'm taking too much of everything, like my base may carbohydrate is overloaded. Definitely I'll get too much of it. My pulse is overloaded. Definitely I'll lack other nutrition. So we need to take into the moderate amount of all those five food groups. Okay. Then customize as per my body need, as per my body weight. The dietitian should or the person should customize my uh, food plate, I can say. Okay. And improve gradually. I told you, not one day initially I'll get, आज if I'm taking too much of iron today, I'll feel कि नहीं कल तो मेरा hemoglobin जो है आज 6 था, कल 9 हो जाने से, that is not possible. Okay. So it is very, small process. Okay. You should need to do, little improvement every day, every day, every day, and then you will see the success. Okay. So this is how you can see the different proportions again. And my pyramid someone has drawn. I get the photo of that. And it is a step by step. It's like a ladder. You are following good habits and you will get the result. Okay. So as per, you can go and check, there are different dietary plans recommendation as per the age group, as per the body mass index. Everything will be there in ICMRI also, or RDA also. Okay. So you can go for that. International recommendation you should always follow. Okay. Clear? Yes, Now, ma'am. exercise regularly, that is very important to have a physical access. Okay. And definitely in this, we should not involve our body into too much of alcohol or something, into bad habits. Okay. What, again, there is one thing I need to discuss, just and case if we are, involved into different types of habit, like drinking alcohol, if you're taking into little amount, it will not cause any kind of deterioration of any part of body. But if I'm consuming too much of alcohol every day, like if I'm taking, one glass 20 ml 30 ml twice a week, or 60 ml twice a week, it will not cause any problem. But if you're taking 60, 70, or 100 ml or 250 ml daily, or like 780 ml daily, what it will cause? Definitely it will cause your deterioration of different body parts. And first, they will affect your livers and all those things, which is very important for metabolism of multiple things into the human body. So again, if I'm taking small amount of
bad habits, but same time I'm maintaining my diet, what you will see, that person is consuming the alcohol, that person is consuming little bit of tobacco, but meanwhile they are having good diet, a good amount of antioxidant. So they will not suffer any kind of disease condition. But too much of alcohol and too much of antioxidant, it will not prevent you from, a disease condition. Okay. So again, the balance is very important with habits also. Okay. So now that is very important if I talk about it. My plate. So how you will divide your diet ki was. So you can see ki the amount of fruits and vegetables, that is your third ice things, third or second part of your table. So it will contain half part. Half of your plate should be covered with your vegetables and fruits. So maximum quantity may we should take for vegetable and fruits. If you are, eating chapati, you should, or rice, that should be one bowl. But if your, vegetables should be 2 to 3 bowls. Okay. So, and protein, like whatever you go for tofu, you go for paneer, you go for pulses, you go for non-veg, it will be again is equal to your this greens. So one bowl rice, one bowl protein, one bowl dal will work along with 2 to 3 bowls of vegetables or fruits. Okay. So this is how you can design your plate. That is a general way which we follow. Okay. So basic necessity of life of different groups, providing the different nutrition. And right food is the optimum amount and essential the meeting nutritional requirements of individual. Okay. So dietary requirement at various different stages of life, the food pyramid and everything we need to follow. Okay. So you can see again, this is, ICMR. I have taken this photos from there. Okay, I'm zooming it out, and you can to prevent the hunger and protection from disease. Okay, so I told you initially in the starting of this lecture ki how, why we take the food. Because it is a process. We feel hungry. That is a physiological process of a body. कि आपका physiology में what happens कि you feel hungry. Why it is? Hunger is an alarming sign. Okay. कि body needs, food now. So what do you need to do? You need to either you can to satisfy that hunger, we can do eat anything, like we can go for solids, we can go for liquid, we can simply drink the water, but balance is very important. Okay, so you can see the half plate is filled with fruits and vegetables, then next half, like I can say more than two-third, I can say two-third plate you can see is covered with your cells and nutri-cells. It will contain rajma and everything over here. And then very small amount of fats, very small amounts of nutrients and seeds, and then certain big amount of your remaining one-third week. Again, we can say ki two-third I'm giving to pulses, eggs, and fruits. So this is how we have designed, okay, this plate along with milk. Milk, आपका calcium requirement will fulfill by milk. Okay, so this is the basic consumption, because why we are doing all this thing, just go on all these links where you can get, web links to get different kind of, I've added for the research papers, like Indian Council has given certain dietary regulatory guidelines for Indian manuals which Indian person should need, other than your RDA allowance कि आपका कितना होना चाहिए body mass index के हिसाब से, एंड WHO का एक रिसर्च पेपर है यूरोप बेसिस पे फॉर बेनिफिट्स ऑफ बैलेंस डाइट. ओके, so in general I have told you everything, but in at the end of this I have added that also, you can go and check. Okay, now I am coming to different, now we have studied this, okay, what is a balance diet. Now what is the different this I am telling you, um, different amount of food we are taking. So what is this micronutrients and macronutrients and that, and what is the importance of that on your body. Okay, so give me 2 minutes. I'll share that document. So, so
I told you कि eating habits and eating behaviors from where we get. So आपका definitely first thing is you're hunger driven. कि why we eat this or why we feel like eating. So hunger है. Next is your appetite. Then culture and social medium of meaning of food. Then habit or customs, emotional comfort. For example, emotional comfort का reason क्या होता है कि certain people you can see I told you like stressed up है. What they need tea or coffee. Okay, certain people stressed up and they go for ice cream, sweetening agent. Definitely, it will. The emotional comfort. Okay. Uh, Convince of advertising. For example, if you watch, moving from somewhere and you can see, the plates and they have, presented and so well that you feel like, you're out of eager, you will go and try that thing. Everyone is saying that this chef is, cooking very good dessert into this area or providing very good non-veg into this area. So what you will go? You go and try. Okay. Next is your nutritional value. ये तो हम being Indians, I can tell you, we think at the last. Okay. कि नहीं body का कुछ nutritional demand भी होता है. And then lastly we go for social interaction. Okay. So habits and customs were what happens certain times you can see ki, like certain families they had habit of overeating. Everyone in family is eating too much. Certain families mein what happens you can see, or certain person you can see, I cannot see the family, you can see in certain person. Sometimes we have seen this is a genetic disorder also, genetic factor also ki, where we can see ki families if they are stressed up, people will go for overeating. So again, it is a habit. See, I'm in stress, I'll start eating. Subconscious state of mind में it is your masochistic habit, I can say. Subconscious state of mind में unknowingly you can do this habit. Okay. So this again. Okay. Next part is we have already discussed कि the sedentary lifestyle 2 से 3 साल का बच्चा 1,000 calories is enough. Okay. But he is very active. It's 1 minute with that kid or that toddler is not staying into a particular region. Definitely he needs extra amount of energy because he is into growth phase. Okay. Then you can see कि 4 to 8 years 1,200 and active है 1,800. Then 9 to 13 1,600 and 2 to active है 2 to 2,200 के around calories. So you can see the different age wise calories increases. But after 30 what you are seeing, the growth is decreasing. The calories demand is decreasing. Why it is so? Because after 25 28 मैक्सिमम ग्रोथ जो है बॉडी का ग्रोथ जो है आपका 25 30 तक हो सकता है. 25 to 30 मैक्सिमम बॉडी ग्रोथ आपका हो गया. मैक्सिमम ग्रोथ जो भी होना था बॉडी का ओवरऑल डेवलपमेंट हो गया. तो आपका ग्रेजुअली डिमांड जब बॉडी ग्रो करिए तो ग्रेजुअली डिमांड बॉडी का ज्यादा हो गया एनर्जी का. आपकी एक्टिविटीज भी इन एज में ज्यादा होती है. बट व्हाट हैपेंस कि आफ्टर 30 यू स्टार्ट एजिंग. बॉडी का हर चीज जो है अब नया कुछ नहीं बन रहा है. वॉट एवर बींग इन टू द बॉडी इट विल गेट रिपेयर्ड. अगर कहीं इंजर्ड है तो वो रिपेयर होता रहता है, सेल्स रिपेयर करते रहते हैं. बट ग्रोथ नहीं होता है. रीजनरेट होता है पर ग्रो नहीं करता. एनी पार्ट इज नॉट ग्रोइंग. इफ समथिंग इज ग्रोइंग इट विल बी कंसिडर्ड एज एबनॉर्मल. ओके. सो आफ्टर 30 व्हाट यू सी अगेन आपका कैलोरीज डिमांड जो है वो डिक्रीज हो जाएगा. ओके. सो this is how we have divided this. Next, now coming to different I told you ki we are going for different this uh food items or food groups I've talked about. So now in that food items or food particles, we are talking about different other variables. Okay. So water, I told you in first lecture ki human body mein why water is so important. So I told you ki every part of our body, if I talk about the majority, again, if we discuss, it will be, we are made up of water. 60 to 70% human body is water. Okay. So again, if you're not taking that water into the appropriate amount, what is the disease condition? We will call it as dehydration. Okay. So particularly if someone is, especially in summer, what we need to see, people say कि लू लग गया है, or in English we call it as, or medical terms में आप बात करेंगे, we call it as dehydrated. Okay. So definitely too much of heat, too much of cold causes the dehydration of body. Okay.
So again, the water is very important component. Every cell contains water. Every, blood है body का जो भी fluid है, everything is majority is water. Okay, so what is the importance of water? Water is importance for electrolyte and pH balance. आपका body में जो भी electrolyte balance है, जो भी pH balance है, वो आपका water कर रहा है. Again, transportation of cell and oxygen, again with the help of water. Okay, so the recommended amount of water, like at per person will be like 4 to 5 liters we just call it as, or you can say it अगर it एक ग्लास की मैं बात करूँ तो आपका मिनिमम 8 glasses होना चाहिए, and glass should be not very small. It should contain like 250 to 350 ml of water into one glass. So वो उसके हिसाब से आपको minimum 8 glasses पीना चाहिए. That is minimum like 2.5 liters or 2 liters. Okay, so but recommended will be like 4 to 5 liters. Okay, so 42. Yes. Anyone wants to ask something? Yes, 50 ma'am, I to have a 60%. question. Yes. Ma'am, how much water should an individual drink on a daily basis? That's I told you, na, ki, we recommend it like 4 to 5 liters. Okay, for if you go into the general recommendation checkup. But basically, if you drink like 2 to 2.5 liters, it will be okay. Okay. So Okay. balance will be maintained into the human body. Okay. So average will be your basically 4 to 5 liters, I can say. But if you drink 3 or 2.5 liters, it will work. Is there any downside of drinking too much water other than frequent urination? Too much drinking water का मैम जैसे average. न्यूट्रिएंट्स का क्या है कि अगर हम लोग उसका एक्सेस अमाउंट कर लेते हैं तो उसके ड्रॉबैक्स हो If सकते हैं इन if लॉन्ग you are टर्म. drinking too much of water, तो definitely आपका electrolyte flushing थोड़ा ज्यादा हो जाता है. Somewhat what I can say. और other than that, electrolyte flushing होगा, too much of urination होगा, definitely you will feel weak. Okay, so. ओके मैम. Other than that, I don't think so. Anything happens. Basically, you definitely. अगर आप too much of water, if I talk about like, तो आपका definitely, for example, recommendation. अगर one go में आप too much of water लेंगे, like एक बार में आप सोचे 2 लीटर पी लें या 1.5 लीटर, you will vomit. आप कभी ट्राई करके देखते हैं, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू वॉमिट दैट वाटर. एक लिमिट से ज्यादा हम पानी एक टाइम में नहीं ले सकते. तो वॉमिटिंग, नोजिया, दैट इज वन थिंग आई कैन से. एंड बॉडी क्योंकि एक्सेस है, उसको यूटिलाइज नहीं कर पा रही, तो किसी ना किसी सोर्स से निकालेगी. तो या तो टू मच फ्रिक्वेंट यूरिनेशन होगा, अदरवाइज आपका वॉमिट आउट होता है. तो ये दो चीजें होती है कि एक्सेस बॉडी नहीं हैंडल कर पाएगी. तो ये दो चीजें होंगी. बट डेली बेसिस पे आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट पी करके, लाइक एक बार में आप वन if 1 glass is of 300 ml, आप जो है उसको 1.5 ग्लास वन टाइम में पी रहे हैं तो इतना डाइजेस्ट है. फिर आफ्टर 2 hours इतना पी रहे हैं तो इतना डाइजेस्ट है. बट वन टाइम आई थिंक आई कैन टेक 3 to 4 liters. देयर इज वन मेथड आई कैन से, डिटॉक्स मेथड, विच वी नीड टू फॉलो. सॉल्ट वाटर मेथड वी कॉल्ड इट एज बेसिकली. Okay, usually people do for weight loss. Okay, in that what we need to do is कि early morning में when you wake up, okay, we need to drink near about 4 liters or 2 liters, I think so, or 1 liter, something is that. I don't exactly remember that. Salted water we drink empty stomach. So what happens, the chances of getting vomiting is very high in that. No, majority of people should not follow this weight loss procedure because of vomiting. Okay, okay, when you drink that much of water empty stomach, you vomit out immediately. So that will lead to a lot of weakness and everything. So that's one thing I have experienced into my clinical practice. So that I can say. Okay, so that is a live example. Other Ma'am, than that, I don't think. are you a medical practitioner? Yes, Oh, basically, so and directly I'm not related to diet or everything, but we had group of people which we work together. So there we have seen the cases of people. Sorry. okay.
Now coming to next part is your protein. Okay, अगेन आफ्टर वाटर बॉडी का मैक्सिमम रिक्वायरमेंट प्रोटीन का होता है. आपकी मसल्स एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. ओके, तो बॉडी में जो भी जिस मात्रा में है मैं उस हिसाब से पढ़ा रही हूँ. तो मैक्सिमम 50 to 60 और 60 to 70% आपका बॉडी इज मेड अप ऑफ वाटर. आफ्टर वाटर सबसे ज्यादा मास, तो अगर मैं वॉल्यूम वाइज और मास वाइज किसी चीज की बात करूँ तो आपके मसल्स है. मसल्स इज मेड अप ऑफ मेजॉरिटी ऑफ प्रोटीन. ओके, तो आपका सेकेंड एविडेंस substance in human body is protein. Okay, so what is the importance of protein? The protein is very important for every cell, functioning of cell. आपका जो lysosomes, everything you can see, every second thing in a body is a protein. Okay, antibodies, enzymes, hormones, everything is, you know, the derivative of protein. Okay, अदर देन दिस आपका हीमोग्लोबिन है. तो हीम इज द आयरन पार्ट, ग्लोबिन इज द प्रोटीन अगेन. तो आपका ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा है या न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन ब्लड से ही हो रहा है, तो डेफिनेटली उसमें ग्लोबिन प्रोटीन तो चाहिए चाहिए ट्रांसपोर्टेशन के लिए. तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशन के लिए भी आपको प्रोटीन का जरूरत है. नेक्स्ट, डेवलपमेंट में आप फॉर एग्जाम्पल मैं के 2 साल के बच्चे की बात करूँ तो वो ग्रो करेगा तो उसको वाटर रिक्वायरमेंट के साथ साथ उसकी बॉडी में आपको प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी चाहिए. तो आप अभी कभी बच्चे पे फोकस करेंगे नीचे ने किस तरीके से डिजाइन किया. तो जब बच्चा किड होता है तो उसका दो ही चीजों पे इनिशियली उसका सर्वाइवल होता है, या तो एक्सटर्नल मिल्क पे या मदर मिल्क पे और वाटर पे. इसके अलावा तो कोई थर्ड चीज इनिशियली 6 मंथ में बच्चा फीड नहीं करता है. आप पल्सेस का, दाल का पानी वानी, आप अधिकतर चीज देखेंगे तो आइदर जो भी है आपका, अब पल्सेस का जो आप वाटर देते हो उसमें क्या है, प्रोटीन है प्लस वाटर है. मिल्क में क्या है आपका, मेजोरिटी में आपका ये क्या कहते हैं कि वाटर प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोटीन प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ फैट प्लस सर्टेन अमाउंट ऑफ यू नो दिस लैक्टिक एसिड जो आपका है, लैक्टोजन लैक्टिक एसिड, अगेन इट इज डेरिवेटिव. ओके, सो यू कैन सी कि प्रोटीन हम बच्चे को और वाटर हम बच्चे को क्योंकि ग्रोथ और एवरीथिंग के लिए चाहिए, तो बच्चे को हम बचपन से ही दे रहे हैं. ओके, देन फिर आपका बोन डेवलपमेंट में, रिपेयरिंग में, मसल्स में, स्किन में, हर जगह आपका प्रोटीन चाहिए चाहिए. देन वाइटल्स फॉर ह्यूमंस मींस आपका फाइटिंग कैपेसिटी, अगर इन्फेक्शन हो गया तो उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए. सर्जरी से ब्लड लॉस हो गया तो रिकवरी के लिए भी चाहिए. तो डेफिनेटली प्रोटीन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स. ओके, सो आपको ये प्रोटीन डिफरेंट डिफरेंट फूड पार्टिकल से मिलेगा. ओके, तो प्रोटीन्स में भी आपको अगर आप देखेंगे तो अमीनो एसिड्स होते हैं. देयर आर 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स इन ह्यूमन बॉडी एंड 11 नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स आर प्रोड्यूस्ड इन द ह्यूमन बॉडी. सो जो 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो कहाँ से हम ले रहे हैं? डेफिनेटली वी आर डिराइविंग ऑल दोस थिंग्स फ्रॉम आवर फूड. ओके, एंड इन दोनों को हम लिंक कर देंगे तो दे विल फॉर्म योर कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन. ओके, सो कंप्लीट प्रोटीन क्या होते हैं कि कंप्लीट प्रोटीन्स आर एसेंशियल अमीनो एसिड्स and incomplete proteins means they lack certain amount of amino acids. They incomplete as name indicate कि they are not, you know, they are missing something. There is certain, you know, qualities they are missing. So there are certain amino acids or there are certain things they are lacking. So that is derived from different sources we take. Okay, so we can see कि a lot of people suffers from protein, uh, deficiency. Then next, if I talk about, अभी तक हमने बॉडी ग्रोथ और बॉडी का जितना भी था उसके बारे में. नाउ बॉडी को वर्क करने के लिए वी नीड अ फ्यूल, and that fuel is your carbohydrate. So energy giving food is your carbohydrate. In last class also I told you that there is two types of carbohydrate. One is your simple carbohydrate, another is your complex carbohydrate. Simple carbohydrate includes your glucose, fructose, sucrose. Okay. अब simple carbohydrate में basically two categories of carbohydrate आता है. One is your monosaccharide, another is your disaccharide. Okay, monosaccharide में single प्रोडक्ट, लाइक जैसे कि आपका मैं ग्लूकोज की बात करूं तो 6 कार्बन कंपाउंड होता है C6H12O6. ओके, तो सुक्रोज की बात करूं तो 2 प्रोडक्ट्स होंगे. डाइसेक्राइड है तो 2 मोनोसेक्राइड विल फॉर्म टुगेदर एंड दे विल फॉर्म 1 डाइसेक्राइड. ओके, तो आपका ग्रैनुलेटेड शुगर हो गया या मिल्क हो गया या मिल्क प्रोडक्ट, दे विल कंटेन योर सुक्रोज. ओके, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मींस कि अभी तक
सिंगल और डाई पढ़ा, अब ये पॉली होंगे, मतलब कि a lot of mono di trisaccharides will form together and they form a complex carbohydrate that is your polysaccharide, स्पेशली वो स्टार्च, जो कि हमें आपकी स्पेशली फ्लोर से मिलेगा, पोटैटो से मिलेगा, पास्ता से मिलेगा। तो मैंने आपको बोला था लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स एंड हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स, ओके फूड। तो low glycemic index food is basically that contains low amount of sugar, okay, and high glycemic index will contain high amount of sugar, okay. So there, just go and have a look कि what is low glycemic index or what is glycemic, मतलब high glycemic index, okay. So if I talk about low glycemic index, there are certain things तो कि हम डाइट में पेशेंट को वेट लॉस में सजेस्ट करते हैं। स्वीट पोटैटो हो गया आपका, एप्पल हो गया आपका, चिक्की हो गया, ठीक है। तो ये आपके सारे जो फूड हैं ये आपके लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं। देयर आर सर्टेन फूड प्रोडक्ट्स आल्सो जिनको हम कहते हैं जीरो ग्लाइसेमिक इंडेक्स आल्सो, ओके। सो जस्ट चेक कि देयर आर, अब आपका उसके अलावा इफ आई टॉक अबाउट वाइट ब्रेड एंड wheat, rice, all these things will, cereals, they will consider under high glycemic index. Okay. So, clear? Yes, ma'am. Okay. So, carbohydrates is again divided into low and high. After that, we have fibers. Fibers का importance क्या है? Basically, जो आपका digestion में बहुत importance होता है, ठीक है? आपका जो है कॉलन कैंसर को बचाता है, ब्रेस्ट कैंसर को बचाता है, कॉन्स्टिपेशन को, डाइवर्टिकुलोसिस को, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, ओबेसिटी, इन सब चीजों को फाइबर बचाता है। बेसिकली वी इंडियन has और द पीपल ऑफ कोरिया, जापान, हम लोगों का अगर डाइट प्लान देखा जाए तो हमें कॉलन कैंसर और रेक्टल कैंसर नहीं होता है अगर आप सिर्फ प्रोटीन फूड ले, ठीक है। तो और या फिर सिर्फ जो है क्या कहते हैं कि फाइन फ्लोर मैदा बेस्ड आप कुछ फूड आइटम्स ले रहे हैं और ब्रेड बेस्ड फूड आइटम्स ले रहे हैं जिसमें आपका रफिश है ही नहीं। तो you can see American peoples and this European culture where the people is very commonly suffering from the colon and rectal cancer. Why it is so? क्योंकि उनके डाइट में we can check कि आपका फाइबर होता ही नहीं है, रफेज होता ही नहीं। That's why they are suffering from these disease condition. So आपका जो भी रिकमेंडेड डाइट है उससे लेस लेते हैं, इसीलिए उनको ये कैंसर बहुत कॉमन होता है। ब्रेस्ट कैंसर हो गया आपका, कॉलन कैंसर हो गया, कॉन्स्टिपेशन उनके यहाँ बहुत कॉमन डिजीज कंडीशन है, ओके। सो दीज आर द अगेन डिपेंडिंग अपॉन योर फाइबर्स, ओके। नेक्स्ट इज योर फैट्स। फैट्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिपिड्स, ओके। सो पीपल विल मिसअंडरस्टूड कि नहीं फैट तो आपका वीट और कोलेस्ट्रॉल का होता है, बट नो, फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्किन। आई टोल्ड यू कि कुशन इफेक्ट है, हीट है, वार्मथ है, बॉडी को कहाँ से मिलेगा? इंसुलेटिंग, जो आपका बॉडी का इनर बॉडी टेम्परेचर जो मेंटेन करता है, इंसुलेटिंग इफेक्ट, वो कहाँ से सारा हो रहा है? आपका फैट से हो रहा है। सो फैट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर मेंटेनिंग हेल्दी स्किन। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी को देखेंगे कि जिनकी डाइट में बहुत ज्यादा क्रीम ऐड है, उनकी एजिंग बहुत डिले होती है, ठीक है, क्योंकि आपका स्किन को इंटैक्ट और टैंगल करके रखता है। जिनकी डाइट में मिल्क, घी, फैट एडिड कम होता है, उनकी डाइट में डेफिनेटली आप उनके चेहरे पे एजिंग फास्ट देखेंगे, ठीक है। इंसुलेटेड बॉडी ऑर्गन्स मीन्स आपका बॉडी ऑर्गन्स को कुशनिंग इफेक्ट देता है और इंसुलेट करता है, ओके। मेंटेनिंग द बॉडी टेम्परेचर, आपका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करता है, हेल्दी फंक्शनिंग ऑफ द डिफरेंट सेल्स एंड फैट soluble vitamins को भी ये कैरी करता है। ए, डी, ई, के, दीज आर द फोर फैट soluble vitamins, okay, and are concentrated from form of energy, okay। So जब भी आपकी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं दे रहा है, जब आप स्टार्व कर मतलब फास्ट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि कार्बोहाइड्रेट आपने प्रोवाइड किया ही नहीं, तो बॉडी को आप जो एनर्जी चाहिए वो कहाँ से लेगा? तो ये जो फैट स्टोर्ड होता है ना, तो जो एडिपोज टिश्यू में फैट स्टोर्ड होता है, इस फैट को वो ब्रेक करता है, ठीक है। और ब्रेक करके फिर उसको आप, इफ यू गो इनटू दिस क्रेब्स साइकिल, वहां पे हम जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब न्यू ग्लूकोज मॉलिक्यूल को फैट से ब्रेक करके बनाया जाता है, और वहां से फिर आपका जो है ग्लाइकोन जेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट होता है, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, तो वहां से आपको एनर्जी मिलता है, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी डेराइव, ओके। सो
Increased LDL while low HDL levels is high risk for coronary. मतलब LDL is and HDL again it is your cholesterol level depending, high density lipid and low density lipid होता है आपका cholesterol dependent सारी चीजें, ओके. सो अगेन ये आपका अगर ज्यादा होगा, ठीक है, अगर आपका एलडीएल लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा तो डेफिनेटली इट विल कॉज योर हार्ट डिजीजेस, ओके. क्लियर. This is again a guideline for your RDA guideline I have taken. You can check the different vitamins, water soluble and fat soluble vitamins हैं. ठीक है, तो there are, if I talk about आपका जो है विटामिन ए, ठीक है, उसके बाद से विटामिन बी. B we have different types, B1, B2, then we have this B6, B12, and niacin. Okay, so these are the different types of vitamin B. Okay, then we have vitamin C, then we have vitamin G, then we have vitamin E and vitamin K. So these are the different types of vitamins जिनका बॉडी में different functions होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं विटामिन B1 की बात करूं तो ये कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है. ठीक है, विटामिन B12 की बात करूं तो विटामिन B12 जो है आपका नर्व सेल्स एंड ब्लड फॉर्मुलेशंस को और जेनेटिक मटेरियल्स में इस प्रोसेस में इंपॉर्टेंट होता है. ठीक है, आपका जो अगेन विटामिन B9 है, फॉलेट है, फॉलिक एसिड है, ये आपका ब्लड और सेल फॉर्मेशन में होता है. ठीक है, तो ऐसी डिफरेंट विटामिन का मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. अदर देन एस्कॉर्बिक एसिड, अगर विटामिन सी की बात करूं तो विटामिन सी आपका बोन्स टीथ, विटामिन सी से डेफिशिएंसी से we suffer from scurvy, that is a gum disease. Okay, then we have blood vessel strengthening, all these things vitamin C is important. Okay, D, as you know कि आपका विटामिन डी जो है आपका कैल्शियम मेटाबॉलिज्म में और फॉस्फोरस मेटाबॉलिज्म में बहुत इंपॉर्टेंट होता है. कैल्शियम एंड फॉस्फोरस का जो है इनवर्स रिलेशनशिप होता है. ठीक है, तो डेफिनेटली दोनों को कंट्रोल विटामिन डी ही करता है. क्लियर. सो नाउ आप कोई भी फूड आइटम मार्केट से लेके आता है, ठीक है, वॉट एवर द फूड आइटम वी आर गेटिंग, जस्ट get in habit of reading that food level. See what amount of food we are taking, so you can calculate how much of calories, how much of fat you are taking in each serving on that particular food product. कि आपका market से, we are not having that habit, but we should learn this habit of reading the food level. How we can read this food level? So there is one sample I have added कि macaroni and cheese का एक sample है. ओके, अब इन्होंने लिखा है कि 1 कप सर्विंग में और पर सर्विंग में और पर 2 कंटेनर्स में क्या क्या कंटेन, तो 250 कैलोरीज. ओके, तो कैलोरीज फ्रॉम फैट इज 110 यू कैन गेट. ओके, टोटल फैट 12 ग्राम्स है. अनसैचुरेटेड फैट जो है आपका 15% एंड ट्रांस फैट इज योर zero. They have trans fat 1.5 gram, zero they have mentioned. Cholesterol in 30 milligram they are telling 10%. Sodium is your 20% and total carbohydrate. So you can see ki, limited nutrition they are giving. Okay, then what is the enough nutrition we need to take? So आपका protein, vitamins, calcium, iron, that is very important. So this is total if I talk about in this. So on the basis of that we get 200 calories diet. एंड डिपेंडिंग अपॉन योर कैलोरीज की ट्रांस फैट एंड एवरीथिंग, कि आपका लेस ट्रांस फैट है तो आप 200 और हाई ट्रांस फैट होगा तो आपका 250 कैलोरीज. सो दिस इज जनरल रीडिंग ऑफ फूड प्रोडक्ट where we can calculate in general how much amount of calories we are taking into the diet. Okay, then servings, like we can take make a measurement. 1 cup, okay, 1 cup का एस्टिमेटम, फॉर एग्जाम्पल इवन चपाती इतना बड़ा बॉल का, मतलब वीट का वो जो भी डो है उसका इतना बड़ा बना रहे और फिर से यू कैन मेजर, तो मीन्स कि दिस मच कैलोरीज वी आर टेकिंग. तो यू कैन जस्ट गो की चपाती और इन सब से एंड देन यू कैन सी कि दिस साइज के डिपेंडेंट और पैन साइज डिपेंडेंट दीज थिंग्स विल बी
describe कि how much energy and what all things we are taking and what is as per our BMI what we should take. Okay. So these are the different serving cards we have. This I already explained you. Okay. So improve eating is very important, just being when you are into college or you are working, so improving eating habit is very important. Majority of people are living into mess or somewhere. So what happens ki varieties is not available, plus second thing टेस्ट बड के साथ या शेफ का जो भी फूड मेकिंग हैबिट होता है वो आपको सूट नहीं करता है. So what happens कि you skip your breakfast, you skip your lunch, you skip your dinner because आपको वो फूड आइटम पसंद नहीं है. तो what happens कि आपका जो वेरिएशन है एनर्जी का वो बहुत ज्यादा होता है. फॉर एग्जाम्पल बॉडी का मैंने रिदम साइकिल सेट किया. बॉडी का रिदम साइकिल मैंने ये सेट किया कि मॉर्निंग में मैं 9 AM से 10 दिन से ब्रेकफास्ट कर 11वें दिन बॉडी को अब 9 AM पे ब्रेकफास्ट चाहिए एंड ड्यू टू सम वर्क अर्जेंसी और ड्यू टू सम इश्यूज आई विल नॉट टेक. व्हाट हैपेंस कि जो आपका ट्रांस स्टोर फैट होगा उसको ब्रेक डाउन करके बॉडी वहां से तो एनर्जी लेगी. अब नेक्स्ट डे क्या होगा कि आप मान लीजिए 4 दिन तक ये बॉडी लाइफस्टाइल यूज कर रहा है, 5वें दिन आपने फिर 9 बजे ब्रेकफास्ट किया, पर बॉडी को तो अभी भी वो स्टोर्ड फैट से एनर्जी लेने की आदत है. तो ये वाला तो एक्स्ट्रा हो गया ना कि वो स्टोर ही करेगा. So this is how why it is very important to eat on time and to maintain everything is because of this. क्योंकि बॉडी का जो आपका बायोलॉजिकल क्लॉक होता है वो अल्टर्ड हो जाता है एंड फिर वो अपने डिमांड को फुलफिल करने के लिए जो भी बॉडी का रिस्टोर्ड आइटम होगा वहां से. फॉर एग्जाम्पल इफ आई नीड अ कैल्शियम आई विल टेक फ्रॉम बोन्स. तो व्हाट हैपेंस कि आपका बॉडी में कहीं और कैल्शियम नहीं है तो वो बोन से लेगा. तो ऑस्टियोपोरोसिस होता है. क्लियर. क्योंकि आपने जो स्टोर्ड है उससे ले रहे हैं तो बॉडी में क्या हो गया, बोन्स में क्या हो गया, वीक हो गए, फोर्स हो गए. तो ऑस्टियोपोरोसिस इज वेरी कॉमन. Okay, so this is how we suffer. So eating well in dining hall or eating well in day-to-day life is very important. If we don't follow all these things, we'll suffer from different types of disease condition. Okay, so now lastly, we are going to study different kind of disease related to this diet. Okay. Hmm. So So if I'm not taking everything in a proper amount, what happens? I will suffer from malnutrition. In India, malnutrition is very common in young age. Okay. So बॉडी का जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है मैं उसके अकॉर्डिंग अगर food intake nahi le rahi hu, so I will suffer from malnutrition. Okay. So having intake of energy and nutrients below or excess needs for longer period of time can affect the health and this is called malnutrition. Mal means कि properly आप accurate amount में नहीं ले रहे हैं. ठीक है. तो माइक्रो डिफिशियंसीज एंड मैक्रो डिफिशियंसीज होती है बॉडी में. माइक्रो मीन्स की न्यूट्रिशन की स्मॉल अमाउंट में डिफिशियंसी हो गई, मैक्रो मीन्स की लार्ज अमाउंट में डिफिशियंसी हो गई. ओके. So one disease condition very commonly which we see is your malnutrition. जो भी बॉडी का न्यूट्रिशन उसके अकॉर्डिंग नहीं लेंगे तो आपको malnutrition हो जाएगा. Worldwide, kwashiorkor and marasmus are the two disease condition caused by lack of protein and energy. Okay, so if you see means if you go and check into the data, in India, why we started this midday meal and all these things. So because of in India we see we are we had a huge chunk of population which is under malnutrition, undernutrition conditions. Okay, and related to that we started certain health programs to overcome with this. So undernutrition basically and midday meal is one of that program. So if I talk about other than this, basically not in India but worldwide we are seeing कि undernutrition is very I can see very common problems in rest of the world also. Okay.
So basically what happens कि बच्चों को वेस्टर्न फूड कई बार पसंद आ जाता है, दैट इज नॉट रिच इनटू द प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एवरीथिंग. बच्चों को फूड की और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स नहीं पसंद आते हैं, तो वी नीड टू, व्हेन दे आर इनटू अर्ली स्टेजेस, वी नीड टू modify. So these are the different issues which we suffer. Okay, so one is कि वर्ल्ड वाइड वी आर सीइंग कि क्वाशिकोर और मैरिस्मस जो है आपका बहुत कॉमन है. अब आई एम टेलिंग यू सर्टेन प्रोग्राम्स which we are running for this. So special nutrition program we are running for to overcome this undernutrition problem. Okay, then crèche for children for working women, क्योंकि आपकी मदर वर्किंग है या बच्चा को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे, प्रॉपर फीड नहीं कर पा रहे. So we have a crèche system, that is one program run by for working women, where the kids are provided with their needs. Okay, then wheat based supplement nutrition program, world food program projects. Okay, and midday special nutrition programs or midday programs we are running. So there are a lot of programs which we are running in India to overcome with these malnutrition problems. Okay, so integrated child services programs, ICDS. So a lot of this. Okay, other than this, if I talk about fat soluble vitamins and minerals, से आपका जो भी deficiency होता है, that will under again coming under micronutrition category. Okay, micro deficiencies we called it as. Okay, then water soluble vitamins are not stored into the body. So आपका micro fat soluble में मैंने micro क्यों बोला, क्योंकि आपका जो once you take, like for example I have taken vitamin D today, it will be stored into the fat. नेक्स्ट डे मैं विटामिन डी नहीं ले पा रही हूँ, तो व्हाट हैपेंस कि फैट स्टोर्ड है तो बॉडी में स्टोर्ड है, तो इट विल यूटिलाइज फ्रॉम दैट. बट व्हाट हैपेंस इन वाटर सॉल्युबल कि अगर आप आज नहीं ले रहे हैं, तो वो कल वाला तो फ्लश आउट हो गया यूरिन के थ्रू या स्टूल के थ्रू, तो डेफिशिएंसी हो जाएगी. तो दैट्स व्हाई जो वाटर सॉल्युबल आपके जितने भी विटामिन हैं, उनको आपको डेली बेसिस पे लेना इंपॉर्टेंट है. इफ यू आर नॉट टेकिंग प्रॉपरली, इट विल कॉज डिजीज कंडीशन. ओके, सो ओवर न्यूट्रिशन में यूजुअली व्हाट हैपेंस कि आपका ओवरवेट, ओबेसिटी इज द कॉमन प्रॉब्लम. अगर आप ओवर न्यूट्रिशन ले रहे हैं, ओवर ऑफ एनीथिंग विल कॉज ओवर न्यूट्रिशन प्रॉब्लम्स में आपको ओबेसिटी इज द कॉमन प्रॉब्लम. ओके, टू मच ऑफ एनर्जी बीइंग कंज्यूम्ड और हाई लेवल ऑफ इनएक्टिविटी. सो ओबेसिटी का मेजर प्रॉब्लम क्या है कि जितना जैसा मेरा लाइफस्टाइल है उसके हिसाब से आई एम टेकिंग टू मच ऑफ न्यूट्रिशन. And second thing, what I'm doing, I'm very less active. Okay. So that is the second thing. Malnutrition में what is the risk by increasing of the malnutrition? So increase the nutrients requirements. Okay. Restricted range of food, reduction in available income, low income, medical condition and psychological conditions. So these are the different, I can say कि risk that can cause by this malnutrition. कि आपका या तो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इंक्रीज रिक्वायरमेंट है, बट घर में या बच्चे की प्लेट में या आपके पास बहुत लिमिटेड न्यूट्रिशन है, ठीक है, या फिर रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ फ्रूट्स और फूड अवेलेबल है आपके पर्टिकुलर एरिया में. ठीक है, सेकेंड थिंग, मार्केट में तो अवेलेबल है बट आपके पास पैसे नहीं, यू कैन नॉट अफोर्ड दैट फूड. ठीक है, नेक्स्ट इज दी लो इनकम ही है. ओके, एंड लो इनकम है तो डेफिनेटली प्राइसेस विल बी वेरी हाई. ओके, देन मेडिकल कंडीशंस, क्या आप दे तो रहे हैं पर बॉडी एडजस्ट नहीं कर पा रही, बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पा रही. देन लास्टली साइकोलॉजिकल issues. Okay, so these are the different risk of malnutrition. So risk कैसे increase हो रहा है, इन सब factors से हो रहा है. अब व्हाट इज अदर डिजीज कंडीशन, मैंने बता दिया कि क्वाशिकोर है, मैरिस्मस है, विटामिन, हर एक विटामिन से रिलेटेड आपका डिफिशियंसी से रिलेटेड आपका विटामिन सी से स्कर्वी है, फिर बेरी बेरी है, फिर नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है तो विटामिन ए से. तो ऐसे करके विटामिन बी से आपका स्कर्वी होगा, ठीक है, विटामिन बी 12 से आयरन डिफिशियंसी होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा. ऐसे ही करके आपका मेजर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम व्हाट वी आर सीइंग कि आपको मैंने बताया कि रफेज या फैट की डिफिशियंसी होगी अगर बॉडी में, तो वी विल सफर फ्रॉम complex or severe disease condition, that will be your cancer. So cancer, if I talk about why cancer happens to the human body, there is a lot of factors like your age, one of the most important thing.
ठीक है, कि आपका पर्टिकुलर एज क्या है और आपका पर्टिकुलर लाइफस्टाइल क्या है. फॉर एग्जाम्पल, द पीपल हु आर एक्सपोजिंग टू मच of radiation, definitely they had a chances of getting the cancerous condition into the body. Next is your genetic. We can see the breast cancers, and there are certain cancers which is genetic, like blood cancers, and a lot of cancers are there. There is a proper list. तो वो आपका जेनेटिक होता है. ब्रेस्ट कैंसर इज जेनेटिक. अगर मदर को है तो कमिंग टाइम में जो डॉटर होगी उसको 99.9 और 8% चांसेस होता है कि उसको हो. अभी नहीं है, फ्यूचर जनरेशन में या फ्यूचर टाइम में हो सकता है, अगर वो इनिशियली से ध्यान ना दे तो. ओके. So breast cancers may we have seen ki is majority of cases mein it's genetic. Next is your environment. I told you like too much of exposure to heat, too much of exposure to UV radiation, too much of exposure to certain kind of chemical can causes, or too much exposure of certain trauma can causes your cancer. Next is your hormones. Over, for example, body में दो cells का production होना चाहिए, but hormone imbalance है तो वो 50 कर रहा है, वो 60 कर रहा है, वो 100 कर रहा है. तो दैट इज अगेन योर हार्मोन. नेक्स्ट इज योर इन्फेक्शन. इन्फेक्शन में क्या होता है, रिपेयर प्रोसेस हो रहा है. तो अगेन बार बार इन्फेक्शन, बार बार ट्रॉमा, तो अगेन रिपेयरिंग दैट विल कॉज योर कैंसर. सो दीज आर द डिफरेंट डिजीज कंडीशन जो आपका डाइट से. तो कैंसर का जो है मेन क्या होता है कि नॉर्मल सेल्स, आपका जो नॉर्मल सेल्स होता है वो कैंसर सेल में डेवलप होता है. तो नॉर्मल सेल विल टर्न इनटू द कैंसर सेल, दैट इज योर ऑन्कोजेनिक सेल्स. ओके. तो नॉर्मल सेल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि दे हैड अ मैकेनिज्म ऑफ कंट्रोल डिवीजन. लाइक फॉर एग्जांपल, one cell will divided into two cells. Okay. But when they are turning into cancerous cells, they will divide it into multiple. Okay. So again, abnormal division will cause this. Okay. Now, if I talk about, basically what kind of diet will, for example, lung cancers, or I can say breast cancers, I have already explained, or bowel cancer, or prostate cancer. So too much of sugar will cause prostate cancer. बाउल कैंसर में आप रफेज डाइट प्रॉपर नहीं ले रहे, दैट विल कॉज योर बाउल कैंसर. ठीक है. आपका जो क्या कहते हैं, लंग कैंसर, स्मोकिंग. स्मोकिंग इज अगेन अ हैबिट, so it will cause. So these are the most common, you know, cancers which is caused by your diet and everything. Okay. So definitely what we have seen, for example, oral cancer, if I talk about, if someone is eating tobacco, okay, and there what you can see कि tobacco आप बहुत टाइम तक आप गुटखा नहीं खाते हैं, what happens कि आपका जो माउथ ओपनिंग है, यूजुअली आपकी 3 फिंगर जानी चाहिए. ठीक है. फर्स्ट फिंगर, सेकंड फिंगर एंड थर्ड फिंगर जाना चाहिए. अगर वो रिड्यूस हो जाता है, 3 फिंगर का टेस्ट नहीं पास कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आपका बैंड्स जो है, फाइब्रोसिस स्टार्ट हो गया है. बैंड जो है वो चीक्स की फ्लेक्सिबिलिटी चली गई है, वो टाइट बैंड्स बन गए हैं. तो आपकी माउथ ओपनिंग रिड्यूस हो जाती है. तो इन दैट सिनेरियो व्हाट इज रिकमेंडेड कि पेशेंट, अगर आप टोबैको खा रहे हैं, आप अगर लाइकोपीन मतलब टोमेटो खाते हैं डेली 1-1.5, रिच इन एंटीऑक्सीडेंट. लाइकोपीन इज एन एंटीऑक्सीडेंट. कैंसर के कंडीशन में आप देखेंगे ओरल कैंसर में हम लाइकोपीन और लाइकोरेट देते हैं. लाइकोरेट में आपका लाइकोपीन होता है. लाइकोपीन इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप टोमेटो खाइए, आप मेडिसिन ना लेके आप टोमेटो खाइए. ठीक है. सेकेंड थिंग वी रिकमेंड इज योर मसाज विथ टर्मरिक. अगेन टर्मरिक इज एन एंटीबायोटिक. तो आप अगर वो डाइट में ऐड कर रहे हैं, वी आस्क द पेशेंट टू मिक्स इनटू फैट. आप क्रीम में हम उसको मिक्स करके उधर अप्लाई करने के लिए बोलते हैं, जो भी जहाँ पे भी टाइटनिंग दिखती है हमें. तो इट विल बी मिक्सड इनटू क्रीम एंड टर्मरिक एंड मसाज इनटू दैट पर्टिकुलर एरिया. सो अगेन हम बैंड्स को क्या दे रहे हैं, टाइट हो गया है, क्योंकि फैट नहीं, वी आर गिविंग फैट with that turmeric. Okay. So again you can see कि how diet is going to prevent such condition. कि अगर मुझे पता है कि मेरी हैबिट्स ऐसी हैं, तो मैं इन चीजों को इनिशियली, अगर मुझे डॉक्टर गाइड कर दे या मुझे पता चल जाए, तो डेफिनेटली. सो यू कैन सी कि कैंसर प्रिवेंशन में डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एंटीऑक्सीडेंट, आप रिच एंटीऑक्सीडेंट खा रहे हैं, रिच फाइबर खा रहे हैं, तो आपको बहुत सारी कंडीशंस नहीं होंगे. बट आप प्रॉपर बॉडी को रिक्वायरमेंट जितना है वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, प्लस आपका एनवायरनमेंट खराब है, तो डेफिनेटली यू विल सफर फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ
डिजीज कंडीशन, अगेन कॉरोनरी हार्ट डिजीज। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि एलडीएल जो होता है आपका लो डेंसिटी कोलेस्ट्रॉल लिपिड आई कैन से, एंड हाई डेंसिटी लिपिड। तो लिपिड डायरेक्टली आपका कॉरोनरी डिजीज को कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। ओके, सो if I talk about coronary heart disease, lipid is what? A kind of cholesterol. Cholesterol क्या करता है कि आपका जो भी ब्लड वेसल है, फॉर एग्जाम्पल उसका डायमीटर 2 mm है, तो उस डायमीटर के अराउंड वो जाके डिपॉजिट होगा। तो वंस इट स्टार्ट गेटिंग डिपॉजिटेड, व्हाट हैपेंस ग्रेजुअली कि आपका डिपॉजिशन होगा, तो ब्लड फ्लो को जितना एरिया मिल रहा था वो कहीं ना कहीं कम हो गया। तो व्हाट हैपेंस कि ब्लड वेसल्स की इनर लाइनिंग में थिकनिंग हो गई, तो ब्लड फ्लो को उतना रिड्यूस ब्लड फ्लो होगा। डेफिनेटली इट विल कॉज आपको पर्टिकुलर ऑर्गन में जब ब्लड नहीं पहुंचेगा तो अटैक आता है, दैट इज इस्केमिक कंडीशन। तो दैट इज योर कोरोनरी हार्ट डिजीज। ओके, तो अगेन हाउ इट हैपेंस रिलेटेड टू योर डाइट। तो यू कैन सी कि हाउ different severe disease condition will associated with your diet। तो अगर आपका डाइट अच्छा है, आपकी लाइफस्टाइल फिजिकल एक्टिविटी है, तो यू कैन प्रिवेंट सो मच ऑफ डिजीज कंडीशन। ओके, देन बॉडी मास इंडेक्स, आई टोल्ड यू कि हाउ वेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर बॉडी मास। ओके, तो पहले तो हम जेंडर चेक करते हैं, फिर कितना बड़ा है, क्या हाइट है, क्या वेट है, उसके अकॉर्डिंग वी डिसाइड। ओके, सो अगेन आई टोल्ड यू कोरोनरी हार्ट डिजीजेस में जो है हम आपकी फैट्स को बंद करवा देते हैं, जैसे कि फिश इंटेक हो गया, सॉल्ट इंटेक हो गया, इंक्रीज फ्रूट्स एंड वेजिटेबल, रफेज डाइट और वाटर इंटेक, वाटर कंज्यूमिंग चीजों को हम इंक्रीज करवा देते हैं। अल्कोहल कंजम्पशन भी हम कोरोनरी डाइट में पेशेंट का बंद करवा देते हैं। ठीक है, सो अगेन आई टोल्ड यू कि वेट प्लस हाइट इन मीटर्स, हाइट का स्क्वायर इंटू मीटर्स में करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम बॉडी मास इंडेक्स निकालते हैं, एंड वी चेक कि आपका बॉडी मास इंडेक्स जो है वो अगर 30 to 40 के बीच में आ रहा है तो आप ओबीस है। ओके, क्लियर? Yes, ma'am. लास्ट इज योर ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स कि ओवरवेट। अब कोई ओबेस होता है तो व्हाट वी कैन सी कि आइदर ही सफरिंग फ्रॉम एनी हार्ट डिजीज, आइदर ही और शी सफरिंग फ्रॉम डायबिटिक कंडीशन, और गॉलस्टोन हो गया, आर्थराइटिस हो गया, एनी जॉइंट प्रॉब्लम। आर्थराइटिस इज बेसिकली योर नी जॉइंट प्रॉब्लम, जहाँ पे नीज जो है वो लॉक हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है, और पेशेंट वॉक नहीं कर पाता। जब फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो डेफिनेटली आपका वेट गेन होगा ही होगा। ओके, so these are the different disease condition which we can see related to obesity। Same time आपका कैंसर भी देखा गया है। ओके, बोन हेल्थ के लिए कैल्शियम एंड विटामिन डी एब्जॉर्प्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब बॉडी में कैल्शियम नहीं होगा तो वो क्या करेगा, बोन से लेगा, और बोन से लेगा, बोन्स का क्या होगा कि जो डिपोजिशन है वहां से मैंने निकाल दिया तो उसमें होल्स क्रिएट हो जाएंगे। दैट होल्स इज नोन एज योर एग्जैक्टली बहुत डीप होल्स होते हैं, बहुत माइन्यूट माइन्यूट होते हैं। दैट कंडीशन इज मेकिंग कि आपके बोन्स वीक हो गए तो आपका ऑस्टियोपोरोसिस कंडीशन वी कॉल्ड इट एज। ओके, सो आफ्टर द एज ऑफ 30-35 जब फीमेल्स का मेनोपॉज आता है, बहुत कॉमन है उनके केस में, बहुत कॉमनली शुरू हो जाता है, क्योंकि हार्मोन्स जो होते हैं, इफ आई टॉक अबाउट ना कि आपका हार्मोन्स की बात करूं मैं तो आपका ये क्या नाम है, पैराथायरॉयड हार्मोन के को आप ये क्या कहते हैं, विटामिन डी और कैल्शियम का रिलीज को कंट्रोल करता है। तो उस हार्मोन में भी थोड़ा पोस्ट मेनोपॉज में इफेक्ट आता है, जिसकी वजह से फीमेल्स में ये कॉमन है। दैट्स व्हाई वी आस्क कि आप आज भी देखते होंगे कि 35 की एज के बाद या 30 की एज के बाद जो है हर फीमेल को कैल्शियम एंड विटामिन डी लेना चाहिए फॉर द प्रॉपर बोन हेल्थ। ओके, सो lastly, if I talk about anemia, anemia is definitely, iron deficiency or blood deficiency, hemoglobin basically, if I talk about, तो आपका हीम पार्ट का deficiency होता है। ओके, सो hemoglobin is made up of two things, heme plus globin। heme is iron part, globin is a protein। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्लोबिन कैसे आपका ऑक्सीजन एंड ब्लड में इंपॉर्टेंट होता है, ऑक्सीजन कैरिंग अदर ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो एक हीम मतलब हीम आयरन पार्ट जो है वो 4 ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है ग्लोबिन।
और फिर वो ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। तो अगर बॉडी में आयरन डिफिशियंसी है तो रेस्टलेसनेस होगा। आप देखेंगे जिसकी बॉडी में हीमोग्लोबिन बहुत कम होता है, उसकी सांसें थोड़ी दूर चलेगा फूल जाएगा। ओके, सो स्पेशली इन इंडिया वी कैन सी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल्स, और वो जो है मेजोरिटी इंडिया इज सफरिंग फ्रॉम, फीमेल्स आर सफरिंग फ्रॉम moderate type of anemia. Okay, so again, vitamin C is essential for your this absorption of uh, your iron. So, so now you can understand ki how we prevent different disease condition by taking proper amount of diet. So with this, we completed this balanced diet. In next class, we are going to you know study all regulatory, drug regulatory, and all regulatory guidelines. Okay. Any doubts? No, ma'am. Okay, okay. So I'm ending this lecture now. Okay. Okay, ma'am. Okay. Okay.